Hello everyone, welcome to the lecture series for class 9th. In today's video, we'll talk about tissues. Let us see the content of this chapter. We'll begin with introduction, then plant tissues and the types of plant tissues. Next is animal tissues and the types of animal tissues. So what is a tissue and how are we going to define it? So there are three things which actually helps in defining tissue. The first thing is that tissue is a group of cells. Tissue cells का एक समूह है, एक group है, in which all the cells are similar in structure and they all work together as a team to achieve a particular function. So a group of cells which are similar in structure and work together to achieve a specific function forms a tissue. So all living organisms, they are made up of cells. In unicellular organism, a single cell will perform all the basic functions. Like in amoeba, digestion, excretion, respiration, it is all performed by a single cell. Okay, because that is the whole organism. But in multicellular organism, there are many cells, actually millions of cells. So most of these cells are specialized to carry out specific functions. Now all the cells do not have to do everything. There are specific cells for specific functions. So specialization and division of labor has taken place in multicellular organisms. So here is an amoeba that is moving. This shows a movement in amoeba with the help of false foot formation that is known as pseudopodia. And here an amoeba forming the pseudopodia is engaged in taking the food inside. There are two types of tissues, plant and animal tissues, and this is a very basic sort of categorization. It is because plants ये अलग टाइप के टिश्यूज से बने होते हैं, एनिमल्स अलग टाइप ऑफ टिश्यूज से बने होते हैं. So because they are made up of different types of tissues, there are differences between plants and animals as well. ठीक है, ये दोनों ऑर्गेनिज्म हायर ऑर्गेनिजम्स हैं और इनमें ये जिस टिश्यूज से बने होते हैं वो टिश्यूज एक दूसरे से काफी अलग हैं, इसलिए प्लांट्स और एनिमल्स में भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं. सो लेट अस लुक इनटू व्हाट आर दीज डिफरेंसेस. द फर्स्ट डिफरेंस among plant and animal is that plants are stationary. प्लांट्स स्टेशनरी होते हैं और अपराइट होते हैं. ठीक है, ये मूव नहीं कर सकते, ये एक ही जगह पे खड़े होते हैं. तो दिस इज व्हाई द सपोर्टिव टिश्यू in these plants, they are generally made up of dead cells. However, in animals, because animals can move, animals move करते हैं in search of food, mate, shelter, so they consume more energy. They keep moving from one place to another place. And इसलिए इनके टिश्यूज ज्यादातर लिविंग होते हैं, they are not dead. ठीक है. Another difference is that in plants, cell growth or division is localized. पूरी प्लांट बॉडी में डिवीजन नहीं होता है. जहां पर होता है वहां पे थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन होता है, हमेशा होगा. बट इट इज लोकेटेड localized to certain regions. The entire body is not having, not experiencing growth. Okay, only a limited localized regions are growing throughout the lifespan. In animals, growth is more uniform and it is not limited to certain locations. Another difference is that the structural organization of organs and organ system is less specialized in plants, or animals may it is more specialized. Okay, let us have a deeper understanding of plant tissues. There are many types of plant tissues. I've tried introducing all of them in this flowchart. So plant tissues are broadly categorized into meristematic tissue and permanent tissue. Meristematic tissue is further categorized into apical meristem, intercalary meristem, and lateral meristem.
Permanent tissues, they are again categorized into simple permanent tissue and complex permanent tissue. A simple permanent tissue may be of these types: parenchyma, collenchyma, or sclerenchyma. A complex permanent tissue could be xylem or phloem. Xylem contains tracheids, vessels, xylem parenchyma, or xylem fibers. Phloem is made up of sieve tube elements, companion cells, phloem parenchyma, and phloem fibers. First category of plant tissues is meristematic tissue, and these are growing tissues of plant. Now plant, as I mentioned earlier, plants cannot grow at all the place. The whole of plant body cannot grow. Growth in plants occur only at certain specific regions, and these regions are made up of rapidly dividing tissue known as meristematic tissue. So these meristematic tissues, they are further classified on the basis of region of their presence, their location. So in a plant body, where are they present? Whether they are at the apical region or the lateral region or the intercalary region. So wherever they are present, accordingly they are classified. So once a meristematic cell divides, it produces a cell that looks like meristem initially. Okay, a meristem cell is dividing, forming daughter cells, and the daughter cells also looks like the parent cell. But after it grows and matures, meristem gets differentiated as permanent tissue. Okay, so all the permanent tissue, they are made up of meristematic tissue. Meristematic tissue contains cells which are very active. They have the dense cytoplasm. They have thin cellulose walls, and they have very prominent nuclei. And that's not all. They also lack vacuoles. All of this is to facilitate the rapid division and growth. These are the three types of meristematic tissue on the basis of where are they located. The first one is apical meristem, which is present at the growing tip of roots and stems. So growth, division in the apical meristematic tissue is supposed to increase the length of stem and length of root. Second one is intercalary meristem, that is present at the base of node in some plants, and this is also supposed to increase the height of plant by lengthening the stem. Lastly, it is lateral meristem, which increases the girth of stem or root. So the second type of plant tissues are permanent tissues. Now, once a meristematic tissue has divided, grown, and has now attained maturity, it will lose the ability to divide. एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड करते हैं, वो ग्रो करने के बाद मेच्योर हो जाते हैं, तो दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड. वो और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और फिर दे टेक अप अ स्पेसिफिक रोल. एक स्पेसिफिक रोल उनको असाइन कर दिया जाता है, उनको काम असाइन कर दिया जाता है. अब ना वो डिवाइड करेंगे ना कोई और काम करेंगे, जो काम उन्हें मिला है वो वही काम करेंगे. सो द चेंज इज नाउ परमानेंट. ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में चेंजेस आते हैं, दे बिकम परमानेंट. बट परमानेंट टिश्यू, एक बार वो उनका रोल फिक्स हो गया, दे आर नॉट गोइंग टू गेट चेंज्ड इनटू एनीथिंग एल्स. सो द चेंज इज परमानेंट, देयरफॉर इनको हम लोग परमानेंट टिश्यू कहते हैं. सो द प्रोसेस बाय विच दे आर फॉर्म्ड इज नोन एज डिफरेंशिएशन. जिस प्रोसेस से एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती है, उस प्रोसेस को हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं. So differentiation involves taking up a permanent shape, a permanent size, and a permanent function. So all the changes are permanent. It's not going to change anymore. Right? So once this process of differentiation takes place, it gives rise to various types of permanent tissues. This is a section of stem which gives you a glimpse of different types of layers of cells present in the stem. So the outermost covering here is epidermis,
then it is hypodermis, we have got cortex, endodermis, and there are a number of other layers of vascular bundle like xylem and phloem, and the components of xylem and phloem. So now just below the epidermis, a few layer of cells, they are all made up of same types of cells. Okay, and they are known as simple permanent tissue. So simple permanent tissue has got three different types of cells. The first one is parenchyma, which is further categorized into three subtypes. But in general, all the parenchyma cells, they are um, the most common simple permanent tissue. They are living cells. They are very loosely arranged and they have got large intracellular spaces. इनके बीच में बहुत ज्यादा, दो सेल्स के बीच में बहुत स्पेसेस होते हैं. ठीक है, ये ज्यादा स्पेशलाइज्ड नहीं होते और इनके सेल वॉल भी काफी थिन होते हैं. सो दे आर वेरी गुड फॉर फूड स्टोरेज. Among parenchyma, the first subcategory is of Sclerenchyma. ये क्लोरेनकाइमा ऐसे सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं, ऐसे पेरेनकाइमा सेल्स हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है. ओके, सो द पेरेनकाइमा which is a simple permanent tissue that contains chlorophyll is known as Sclerenchyma. Right? Erenchyma भी पेरेनकाइमा के सब टाइप्स हैं और ये एक्वाटिक प्लांट्स में पाए जाते हैं. बिकॉज दे हैव गॉट लार्ज एयर कैविटीज, इनके बीच में एयर की कैविटी होती है, तो ये हेल्प करते हैं वाटर में प्लांट बॉडी को फ्लोट करने के लिए. ठीक है, दे हेल्प द प्लांट्स टू फ्लोट in the water body because they have got air cavities. Right. Next one is the third and last category of parenchyma is prosenchyma. ये elongated cells होते हैं और इनका tapering end होता है. They contain starch और इनके cell wall में lignin present होता है. The second type of simple permanent tissue is collenchyma. Collenchyma cells are also living. They are elongated and irregularly thickened at the corners. आप देखोगे कि इनके वॉल पे कॉर्नर्स में वॉल थिकनिंग पाई जाती है. ओके, देयर इज वेरी लिटिल इंट्रासेल्युलर स्पेस. दो सेल्स के बीच में स्पेसेस नहीं है, बहुत कम है. अनलाइक द पेरेनकाइमा सेल्स. ठीक है, they provide flexibility and mechanical support to the plants. So they are very important because they are strengthening the plants. Okay, and at the same time they are also letting the plant be flexible. Plant को flexibility, आप देखते होंगे कि जब बहुत तेज हवा चलती है तो प्लांट इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि दे विल मूव एंड दे विल कम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन. ठीक है, बहुत स्टिफ नहीं होते. सो द flexibility is also due to presence of collenchyma. Okay, साथ ही साथ plants के जो various parts होते हैं, when they bend like tendrils और क्लाइंबर्स के जो स्टेम्स होते हैं वो उनको बेंड करना होता है, कभी कहीं पे झुकना होता है. क्लाइंब कर रहे हैं, द क्लाइंबर्स आर क्लाइंबिंग ऑन द वॉल, सो there are instances that the stem has to bend. So ये बेंडिंग वाली फैसिलिटी भी कोलेनकाइमा की वजह से है. So they are located in leaf stalks below the epidermis. लीफ के स्टॉक में ये एपिडर्मिस से जस्ट नीचे पोजिशनड होते हैं. The third and last type of simple permanent tissue is Sclerenchyma, which, unlike the first two types, the parenchyma and collenchyma, these cells are dead. ठीक है, इसमें सेल्स डेड होते हैं. पेरेनकाइमा में और कोलेनकाइमा में सेल्स लिविंग थे. सो दीज आर डेड सेल्स एंड दे आर लॉन्ग एंड नैरो. इनके भी वॉल में लिग्निन पाया जाता है, जस्ट लाइक द प्रोजेनकाइमा. ठीक है, और वॉल्स बहुत थिक होते हैं. एट टाइम्स ये इतने थिक हो जाते हैं कि यहाँ पे बीच में सेल के अंदर कोई भी इंटरनल स्पेस नहीं बचता है. सो द सेल्स आर डेड, द इंटरनल स्पेस में कुछ है भी नहीं, लेकिन देयर इज नो लाइफ इनसाइड द सेल. सो दीज आर डेड सेल्स. और इनके वॉल में लिग्निन पाया जाता है. ओके, द सेल वॉल इज लिग्निफाइड एंड वेरी थिक. थिक लिग्निफाइड वॉल्स आर देयर.
यहाँ पे आपको दो अलग अलग व्यू में स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स को दिखाया जा रहा है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन भी है और ट्रांसवर्स सेक्शन भी है। सो दीज आर प्रेजेंट इन स्टेम्स, स्टेम में अराउंड द वैस्कुलर बंडल्स, लीव के वेन्स में दिखेगा, सीड्स और नट्स के हार्ड कवरिंग में दिखेगा, एंड wherever they are present, because these are dead cells, they will make the plant part hard and stiff। जहां भी ये प्रेजेंट है ये उस पार्ट को स्टिफ और हार्ड बना देंगे। so because it makes the plant part hard, it provides strength to the plant। So one very good example of this is husk of a coconut। कोकोनट के हस्क को देखा होगा आपने, जिसको हटा करके अंदर से फ्रूट निकाला जाता है। द कोकोनट, द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट को निकाला जाता है। It is made up of sclerenchymatous tissue। So as you see here in this image, there are different types of plant tissues represented here. The first one is parenchyma, which is the unspecialized cells, and they carry out most of the plant's metabolism. Chloroplasts are shown, so these must be the chlorenchyma cells. Then we have got collenchyma that provides flexibility and support to the plants. We have got sclerenchyma that mostly consists of the dead cells and provides mechanical strength to the plant, rigidity to the plant, and then we have got phloem and xylem that we are going to understand in the next few slides. Let us have an understanding of epidermis. Epidermis is the outermost layer। ये प्लांट के बाहर की तरफ एक लेयर होता है जो कि सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना होता है। इट कवर्स द एंटायर प्लांट सरफेस एंड देयरफॉर इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, ये बाहर की तरफ होता है, पूरे प्लांट बॉडी को कवर कर रहा होता है। सो ये सारे ही प्लांट पार्ट को प्रोटेक्ट भी करता है। एंड विच एवर प्लांट इज देयर फाउंड इन ड्राई हैबिटाट, जैसे डेजर्ट में मिलने वाले प्लांट्स होते हैं, बिकॉज पानी कम है ऐसे लोकेशंस पे, तो द प्लांट्स दे वुड ट्राई टू रिटेन ऑल द वाटर। वाटर लॉस नहीं कराना, वाटर को रिटेन करके रखना है, क्योंकि बाहर पानी है ही नहीं। So in those plants which grow in dry habitat, the epidermis is thicker to prevent water loss. Epidermal cells which are present on the aerial part of plant, वो एक waxy water resistant layer को secrete करते हैं, ठीक है, on the outer surface। क्यों? So that it can protect against the loss of water, it can protect against the mechanical injury, और किसी parasitic fungi का invasion, किसी pathogen का अंदर entry उसको भी रोक सके। So epidermis that helps in protection against the mechanical injury or against the invasion of any pathogen. It is a continuous layer without any intercellular spaces। इसके बीच में गैप नहीं होता है, कि यूनिफॉर्म लेयर होता है, कंटिन्यूअस लेयर होता है, बीच में कोई ब्रेक नहीं है, बीच में देयर इज नो गैप। ठीक है, रूट के जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं, इट विल हेल्प इन वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जो रूट में प्रेजेंट है वो वाटर को एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करेंगे, और इसके लिए इनके पास लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स होता है, जिससे कि वो अपना सरफेस एरिया को बहुत बढ़ा लेते हैं, और वाटर एब्जॉर्प्शन भी उसी तरीके से, रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, डेजर्ट प्लांट में एपिडर्मिस के ऊपर एक और वैक्सी कोटिंग होती है क्यूटिन की, जो कि एक पॉलीमर है विच फॉर्म्स द आउटर मोस्ट लेयर नोन एज क्यूटिकल। एपिडर्मिस के ऊपर, क्योंकि एपिडर्मिस से ही उसको सिक्रीट कर रहा है। ठीक है, एपिडर्मिस अपने ऊपर एक और वैक्सी कोटिंग को सिक्रीट कर रहा है जिसका नाम है क्यूटिन, और उस लेयर को कहते हैं क्यूटिकल। सो एज यू कैन सी हियर इन दिस ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ नेरियम लीफ, the epidermal layer here is secreting cutin on top of itself, and the layer is known as cuticle। और उसी तरीके से अंदर फिर below the epidermal layer there is parenchyma, and then we have got bundle sheath with xylem and phloem, the vascular bundle. You have got more different parenchymatous cells, and then we have got the sunken stomata here, the hair-like projections, and the lower epidermis, that is the base of this leaf. Focus at this image again. There are two
layers of epidermis, the upper epidermis and the lower epidermis. So this is the top of leaf and this is the underside of leaf. एक लीफ को आप देखो तो उसका दो साइड्स होंगे, एक ऊपर की तरफ होगा और एक नीचे की तरफ होगा. So ऊपर वाला layer is a continuous layer and that helps in protection and all and also secretes cutin. नीचे वाला the underside of leaf, it has got stomatal openings. ठीक है, यहाँ पे कुछ openings पाए जाते हैं. ये पोर लाइक स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोपिक है, नेकेड आई से नहीं दिखता, अंडर माइक्रोस्कोप ही आप इसको देख सकते हैं एंड दीज आर नोन एज स्टोमेटा. So in the epidermis of leaf there are especially in the underside of leaf, ठीक है, और यंग स्टेम में भी ऐसे स्टोमेटल ओपनिंग्स पाए जाते हैं एपिडर्मिस के बीच में. So these are all the epidermal cells and these are the guard cells और उसके बीच में जो पोर है इसे हम लोग स्टोमेटा कहते हैं. These stomata are enclosed by the kidney shaped guard cells which help in exchange of gases and in transpiration. राइट, तो ट्रांसपिरेशन वाटर का लॉस भी इन स्टोमेटल ओपनिंग से ही होता है और गैसेस का एक्सचेंज भी इन स्टोमेटल ओपनिंग से ही होता है. राइट, सो मोस्ट ऑफ द एपिडर्मल सेल्स दीज आर फ्लैट और अक्सर इनका आउटर और साइड वॉल ज्यादा थिक होता है, इनका इनर वॉल लेस थिकर होता है. Okay, so this one is a lateral view of guard cells and the epidermal cells, and this is the surface view of the guard cells and epidermal cells. This is the stomatal opening and these two are the kidney shaped cells known as guard cells. Guard cells opening को control करते हैं, इस stomata के खुलना बंद होना इन सबको regulate करते हैं. So therefore the guard cells also help in the rate in which gases will be exchanged with the environment, किस रेट से कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाएगा और ऑक्सीजन छोड़ा जाएगा, और वाटर लॉस को भी रेगुलेट करते हैं. As the plant grow older, there are certain changes taking place in the outer protective covering. ठीक है, इसमें आप याद करो कि बाहर में एपिडर्मिस होता है, फिर उसके नीचे हाइपोडर्मिस एंड देन वी हैव अ लेयर ऑफ कॉर्टेक्स. ठीक है, द कॉर्टेक्स कंटेन्स अ स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम जिसमें डिवीजन होने के बाद कुछ नए सेल्स बनते हैं एंड दे कॉन्स्टिट्यूट कॉर्क. कॉर्क डेड सेल्स से बना होता है, मतलब कॉर्क के सेल्स डेड होते हैं और दिस इज व्हाई व्हेन रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व्ड सेल्स ऑफ कॉर्क ही एक्चुअली ऑब्जर्व्ड डेड सेल्स, है ना. So the cells are compactly arranged and they do not have any intercellular spaces. ये एक और सब्सटेंस भी होता है इनके पास, इनके वॉल में, जिसका नाम है सिबेरिन, और इसकी वजह से the cells of cork are impervious to gases and water. The next type of permanent tissue is complex permanent tissue, and because they are complex they are obviously made up of more than one type of cells, और although they are made up of one more than one type of cells लेकिन उनके बीच में बहुत अच्छा coordination होता है. So they all coordinate very well to perform a common function. एक ही function है, इनका काम एक ही है, but coordination बहुत अच्छा है. So the two good examples are xylem and phloem. They are both conducting tissues, ठीक है, और together they constitute vascular bundle. Xylem, which is made up of tracheids, vessel elements, parenchyma, and xylem fibers, they are they help in transport of water and mineral vertically. The shape of tracheid and vessel element is tubular, so they are helping in transport vertically. Also, most of the cells of tracheids and vessel elements are dead at maturity और उनके पास primary and secondary cell wall होता है. पिट में जो यहाँ पे बीच में आपको पिट्स दिखाए जा रहे हैं, they do not have I mean the secondary wall is thin or missing in these pits, so they allow water flow laterally. Also the parenchymatous cells, they help in storage of food, and xylem fibers, they mainly help in supportive functions. Phloem is another type of complex permanent tissue and it is made up of sieve cells, sieve tubes, companion cells, the fibers and phloem parenchyma.
Now, this sieve tube, these are also tubular and these are cells with perforated walls. So that is why the term sieve is given to them. And phloem, all together with all these component cells, they are supposed to transport sugar and other food items from leaves to the other part of plants. So except the phloem fiber, all the cells of phloem, they are living. That is all in this video. In the next video, we'll discuss animal tissues. Thank you.